Hi guys, so finally the CMAT result is out, and what I'm gonna do in this video is basically I'm gonna give you guys an idea that okay, what percentile you are getting what kind of colleges, right? Now another thing that I think from this perspective is that so a lot of people have given CMAT and there are a lot of colleges that are available, but again it's quite important that you now take a wise decision as far as your colleges are concerned, because it's not only the cutoff that we need to kind of focus on, or it's not only the marks that we need to focus on, but again you can actually think about colleges step by step. So I've been getting calls from students saying that okay, this is my percentile, should I go for this college or should I go for that particular college? So this is something I'm going to talk today. So definitely if you are 99.99 percentile, you are short in Jamnalal Bajaj, this is definitely MMS, because JB has only one program, that's MMS. So you are getting into JB IMS. So if you're all India rank 1, all India rank 2, rank 3, certainly you can get into. Again, थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे मैटर करेगी. Last year the list went down because a lot of people, like there was a confusion कि CMAT JB लेगा या नहीं लेगा, because of the reason the list went down. So again, like 99.9 is a safe number to get into Jamnalal Bajaj this year. If at all they take the CMAT, if at all the college accepts CMAT, mostly they should be accepting. So you are there, done, understood. Sydenham 99.96. If you are 99.97, I've been getting messages from a lot of 99.97 people saying that sir Sydenham hoga kya? So 99.97 short. Last year one of my student Savrab, all India rank 17 with 99.97, he's in Sydenham. So if you are 99.97, all India rank 10, 12, 13, whatever, you are there in Sydenham short. 99.96 is also possible. I'm just giving you guys an idea because I've been getting messages from these particular sort of percentile ka bacha log. 99.96 is again you can expect your Sydenham very well. KJ Somaya is not there. They scrapped the their MMS program completely. So you can expect Wellinger even at 99.91, 99.90 kind of a percentile. If you are somebody who has scored 99.80, SIS and Dalmia, short. Now understand this, when I talk about KJ Somaya, right? So KJ Somaya ka actually MMS program nahi hai, but KJ Somaya has PG program, and they have lot of program by the way. PG Core, PG IB, PG FS, PG IMC, PG Healthcare, rural, retail, so around about 7 to 8 programs these guys have, right? And all programs for their PG, they will be accepting CMAT. Now the point here is that the cutoff, I have seen some people saying that cutoff is 90 percentile, but it's not going to be 90 percentile. Cutoff is going to be 98.50 say leke 99. So if you have that kind of a percentile, then only you can fill up call then only it makes sense to fill up KJ Somaya का form. 90 percentile, people will say that कि 90 percentile पे call आ जाएगा, convert 98 पे हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है, to be very honest. Conversion का cutoff और call लाने का cutoff माना के दोनों अलग अलग होते हैं, बट एक्चुअली द डिफरेंस इज क्वाइट वास्ट. अगर प्रोफाइल वैसा हो तो ठीक है. लास्ट ईयर मैंने देखा था बिंग पैनलिस्ट इन केजे 99.40 वाला बच्चा क्रैक नहीं कर पाया, वेयरएज 98.50 वाला बच्चा केजे सोमया क्रैक कर लिया, राइट? तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, तुम्हारा इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, तुम्हारा प्रोफाइल पे डिपेंड करता है. सो गाइस टेक अ वाइज कॉल कि यार ठीक है केजे सोमया का एमएमएस नहीं मुझे मिल रहा है, आई कैन डेफिनेटली गो फॉर केजे सोमया का पीजी प्रोग्राम. बट अगेन अगर हम पीजी प्रोग्राम के लिए जाते हैं केजे सोमया के, इसका फीस होगा 18 से 20 लाख. और अगर आपको करना है एमबीए फाइनेंस, सो अगेन इवन केजे सोमया इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न. On that front, you can definitely go for a college called as Dalmia, right? Even if you're somebody who's got 99.90, right? And let's say you have Wellinger option, you can definitely choose Dalmia over and above Wellinger if at all you want to go for MBA Finance, right? And even for PG Finance for that matter, जिसके बारे में हम shortly बात करेंगे. तो point यही है कि यार you need to understand कि ठीक है ROI के बारे में तो हम बात करेंगे, no doubt about it. ROI के बारे में जब हम बात करते हैं तब अगर हम बात करेंगे let's say जिम, राइट अगर हम गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो जिन में कुछ प्रोफाइल जो होती है फाइनेंस के लिए दे आर क्वाइट बेटर. सो यू कैन टेक दैट कॉल कि केजे सोमया और मुझे जिम. सो यू कैन काइंड ऑफ टेक दैट कॉल कि चलो मार्केटिंग के लिए दोनों भी कॉलेजेस सेम है, दोनों की फीस भी सेम है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. देन यू कैन गो फॉर केजे सोमया, नो डाउट अबाउट इट. बट अगर 99.80 परसेंटाइल आपके है, सो रादर देन ऑप्टिंग फॉर केजे का पीजी, इट्स बेटर यू गो टू दालमिया, सेव सम मनी एंड गेट अ बेटर प्रोफाइल इन फाइनेंस. सो दैट इज समथिंग यू शुड बी लुकिंग एट. Fine, Wellinger is fabulous for marketing, no doubt about it. Let's say you are 99.90.
you are 99.90 and you are getting Wellinger MMS. अब यहाँ पे you can afford to get into KJS Omega PG because KJS Omega PG is definitely as a brand, as a placement, definitely KJ has the upper edge compared to other colleges. Now the point is ROI. यहाँ पे शायद से आप सोचोगे कि यार वेलिंगर MMS में मेरे को फीस कम हो रहा है, मैं 18 लाख क्यों भरूँ KJS Omega में. बट गाइज अगेन ROI की जब हम बात करते हैं तब मेरे ख्याल से लाइक माई पर्सनल व्यू इज ROI is not always greater than the brand. For me, brand is always greater than the ROI. पैसा बना लोगे, पैसा निकाल लोगे definitely. Once you are coming out of the B school, 3 to 4 years you will be able to make money. So don't worry about ROI. That's how you need to understand कि ठीक है यार कहाँ पे कौन सा कॉलेज लेना makes lot of sense, right? Then you talk about colleges like 99 percentile. अगर आपको 99 percentile है, then you can sure shot get all the top 10 colleges. मतलब उसके नीचे वाले जहाँ पे बात होती है पुम्बा की, जहाँ पे बात होती है तुम्हारे चेतना की, एमएटी की, आईएएस की. अगेन मैं बात कर रहा हूँ एमएमएस प्रोग्राम्स के बारे में ओनली. नाउ वी विल टॉक अबाउट पीजी प्रोग्राम. अब पीजी प्रोग्राम में क्या होता है, पीजी प्रोग्राम विल कम अप विथ योर जीडीपीआई. कुछ कुछ कॉलेजेस वैट भी लेते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस केस डिस्कशन भी लेते हैं, राइट. अब अगर आपका एक सेफ कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो अगर आपको 80 परसेंटाइल है, अगर आपको 80 परसेंटाइल है देन डेफिनेटली आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो वेलिंगर मुंबई एंड वेलिंगर बैंगलोर से. फाइन, आप यहाँ से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू आर 80 परसेंटाइल प्लस. यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कॉल फ्रॉम बिमटेक, IMT नागपुर, जाइन बैंगलोर, जयपुरिया, SIS, चेतना, MET, IES. यहाँ से आप डेफिनेटली कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर देयर पीजी प्रोग्राम. अगर हम 90 परसेंटाइल पे है तो ग्रेट लेक्स से भी कॉल आ सकता है. बट यहाँ पे एक ही है यार कि यार ग्रेट लेक्स विल ऑल्सो चेक योर प्रोफाइल, राइट. थोड़ा सा प्रायोरिटी प्रोफाइल को दिया जाएगा. सो 90 परसेंटाइल पे यू कैन गेट ग्रेट लेक्स, यू कैन गेट जिम, अमेजिंग फॉर मार्केटिंग एंड इवन फॉर अदर स्पेशलाइजेशन. IFMR इज ऑल्सो गुड. दालमिया is also something that you can get at 90. मेरे ख्याल से दालमिया आपको 85 पे भी कॉल दे सकता है. बट लेट्स सी on a little bit on aggressive level, on a kind of a safe level, मेरे ख्याल से 90 परसेंटाइल पे you can apply at 85 परसेंटाइल also कॉल आ जाएगा, नो डाउट अबाउट इट. बट यहाँ पे वही बात है कि यार मैं ग्रेट लेक्स चलूँ या मैं जिम चलूँ या फिर दालमिया चलूँ या फिर IFMR चलूँ, फाइनेंस करने तो ये दो चीज़ें आप आराम से पकड़ सकते हो. अब रही बात वेलिंगर की और जिम में, डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर जिम, नो डाउट अबाउट इट. अगेन वेलिंगर बैंगलोर इज ऑल्सो बेटर ऑप्शन. ऐसा नहीं कि वेलिंगर बैंगलोर इज नॉट दैट ग्रेट, दे आर डूइंग fabulous, they are doing very good. So this is what you can understand, this is where you can gauge your option कि चलो ठीक है ये मेरे परसेंटाइल्स है. I would still recommend कि यार सिंपल सी बात है, अगर 80 परसेंटाइल आपका CMAT में है, राइट, I will definitely want you guys to work a lot on CET and try to get into these colleges by their MMS program. So rather than going for इनका PG program, why not to get into MMS, save some money, because placement तो दोनों का umbrella होता है, मतलब common placements ही होती है mostly, right? And that's the reason then you can kind of look out for CET. So if you are 90 percentile plus, as far as your CMAT का percentile is concerned, डेफिनेटली फॉर्म फिलअप कर दो, GDPI के लिए प्रिपरेशन अपना चालू कर दो, एज सिंपल एज दैट. इफ यू आर लेट्स से 99.80 प्लस, आपका शॉर्ट शॉर्ट दालमिया MMS या फिर आपका वेलिंगर भी हो सकता है. 99.96 हुआ सर, आप CET के लिए भी ट्राई कर सकते हो. यू माइट गेट 99.97 इन CET एंड ऑल दैट, यू कैन गेट इनटू जमनालाल बजाज. सो यू कैन लुक आउट फॉर CET ऑल्सो. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे CET देना ही नहीं है, मेरा ये परसेंटाइल है, आई एम गेटिंग इनटू सिग्नम, इफ नॉट वेलिंगर तो शॉर्ट, डोंट इवन गो फॉर CET. यू आर देयर, यू आर डन एंड डस्टेड, right? So this is a small kind of a view or kind of a review, I would say, or kind of an opinion from my side. So this is the way I look at these colleges, that yeah, you need to sometimes save money, but again sometimes ROI देखना ज़रूरी नहीं होता है, because definitely आपकी जो करियर है वो यार 30 से 40 साल की, चलो 30 से 40 भी नहीं यार, 15 से 20 साल की है, राइट? इतने में तो पैसा वसूल हो ही जाएगा. So guys, look at from that perspective. So this is my exhaustive list. These are like short percentile versus colleges that you can have. If there is any doubt you have, you can put the comment on this video and I'll get back to you guys. So guys, that's it from my side. Thank you so much for watching this video.